everyone. I once again welcome you all to this lecture series on artificial intelligence and also this video from Adult Tinkering Lab. So this video will be a continuation to our previous video which was on Arduino's hardware. In this video, we will learn about the software part, that is how we do programming in Arduino. So let's just have a quick recap of what we have done in our previous video. If by any means you have missed our previous video, you can anytime go to our channel, that is MGM's ePortal channel, and there you can find our previous video which was on hardware. So in our previous video we have done or we have seen introduction to hardware of Arduino Uno. And in this lecture, what are we going to learn today is basic programming in Arduino, ideally with the help of an example. So without wasting much time, let us move to the programming part. So what all things we have seen in our previous video is that we can make different projects with the help of Arduino, even an automated mini city. So what all things are required for building any mini city? We can see there can be light sensitive street lights, timed traffic lights, automated gates using proximity sensor, cars that drive the city streets. So there are so many other things that we can do to build a mini city. Yes, and that too with the help of Arduino. So here you can see there is an Arduino and there are various parts, and this we have already discussed in our previous lecture when we were discussing about the hardware part. So let us move to the programming part. So you have to first download IDLE or ID of Arduino, which is an integrated development environment. This you can download it from as you can see at the bottom of your screen, www.arduino.cc. From here you can download this IDE, Arduino IDE, for free. Once downloaded, you will see a window just like you are seeing now. Here you can see that there is compile button here, and next to it is stop button, and there are few more uh, options. Here you can see this is the platform, or you can say the environment where we write the program, or in case of Arduino we call it sketch. So it is the code editor where we write our code, or we can edit our code, and the output can be seen with the help of this text output, where we can see the output. So in Arduino, while we write any program or sketch, so what is this sketch, program, or code? What is the main use of this? So with the help of program or code, it actually commands and other information are sent to the LEDs. Okay, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, वो होता है LEDs के लिए, मोटर्स के लिए, या फिर सेंसर्स के लिए. And this program is generally to instruct the microcontroller chip. Okay, in our Arduino we have Atmega 328P microcontroller. Okay, and the coding or the sketch or the program or the instruction that we give is given to the microcontroller, and with the help of microcontroller the information is sent to LEDs, motors, and from sensors through digital and analog input and output pins. Here you can see there is a sensor connected to Arduino. This is ultrasonic sensor, and what we do is we give the instruction to the microcontroller how the input and output of this device is to be
analyzed or how it should be managed. So let us see a simple setup. Here you can see that we have connected LEDs to our Arduino with the help of this digital pin, and we again give power to this breadboard in which the LEDs are connected. We give it through the this jumper wire cables. So let us see the basic of coding or programming in Arduino. So once we download the Arduino IDE, there we can see there will be two basic sections as you can see in your screen. There will be a void setup function and a void loop function. So this void setup function starts with an open curly bracket and closes with a closed curly bracket. Similarly, void loop is also opened with the open curly bracket and closed with a closed curly bracket. So these are two setups and these are the two basic sections of any Arduino programming. So let us see how this works. So let's start with the first section, that is setup, void setup that we just saw. So what is this setup? The setup section is used for assigning input and outputs. Example, motors, LEDs, sensors, etc. These are connected with the help of setup function. For example, अगर आपने किसी सेंसर को कनेक्ट किया है अपने आर्डिनो से और आप चाहते हैं कि उसको या तो अपना इनपुट लें या फिर उसको अपना आउटपुट लें, सो ये सारी चीजों को आपको सेटअप फंक्शन में डिस्क्राइब करना पड़ता है. ओके, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज वेदर द डिवाइस इज आउटपुट और इनपुट. सो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आप आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है सेटअप फंक्शन में. एंड टू डू दिस वी यूज द कमांड पिन मोड. So this is the first void setup function, and under this you can see that we are using pin mode, and this is how it is written. You can call it the syntax for writing pin mode. This is you have to be very careful that this Arduino IDE is case sensitive. You can see here pin mode is written little bit differently. How? You can see here PIN, which is written in small case or small letter, and M, especially M and only M is written capital here. Okay, so for this code to run or compiled, we have to use this same syntax. अगर यहाँ पे आप M small लिख देंगे तो ये पूरा जो कोड है ये काम नहीं करेगा. Okay, so we have to be very careful about this. Okay, so this is to be written like this only, and here you can see we have selected a particular pin number. 9 here is referring to the pin number of Arduino which we have assigned as output pin. उसको हमने ऐसा assign कर दिया है कि pin number 9 जो है वो हमारा output pin रहेगा, and that we have written under void setup जिसमें हम input devices और output devices के लिए pin को जो है assign करते हैं. Okay, so this is pin or port and the input or output pin. Okay, output devices that has to be connected. So this is how we write pin mode syntax code under void setup. Next is void loop. Under this function, what we do is we try to do the we try to give the instructions to Arduino how that input or output device has to be handled. कैसे वो input device या output device काम करेगा उसको यहाँ पे हम लिखते हैं under void loop. And इसको हम loop इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये repeat होता रहेगा बार बार. Okay, for example, in your screen you can see a simple code of making a LED to glow and
to make it just dim. Okay, here you can see digital write. Digital write means we are instructing pin number 9 to go high. High means उससे जो भी device connected होगा उसको एक particular voltage जाएगा या फिर उसको एक voltage मिलेगा. Okay, in case of our program which we are seeing, हमने pin number 9 में एक आउटपुट डिवाइस लगाया दैट कैन बी एनी एलईडी. सो अगर इस केस में अगर हम एलईडी की बात करें तो इस कोड से एलईडी जो है वो हाई हो जाएगा. हाई होगा मतलब ग्लो करेगा. ओके, एंड वी डिले इट फॉर 1000 मिली सेकेंड. ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये 1000 मिली सेकेंड. 1000 मिली सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड. इसका मतलब ये दो लाइन का मतलब ये है कि पहले तो आप पिन नंबर 9 से जो भी आपका आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है उसको आप हाई कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर गिविंग इट वोल्टेज एंड यू आर मेंटेनिंग दैट फॉर 1000 मिली सेकेंड. मतलब आप उसको 1 सेकेंड तक वैसे ही रख रहे हैं. आफ्टर दैट इट गोज टू द थर्ड लाइन विच इज डिजिटल राइट 9 एंड वी आर असाइनिंग इट अ लो वोल्टेज या फिर जीरो. हम उसको पावर नहीं दे रहे हैं. अगर एलईडी की बात करें तो अगर ऐसा लिखते हैं डिजिटल राइट 9 कॉमा लो, दैट मींस वी आर डिमिंग दैट एलईडी. हम उसका जो पहले ग्लो कर रहा था उसको ऑफ कर रहे हैं. एंड अगेन वी आर डिलेइंग इट फॉर और मेंटेनिंग दैट डिम लाइट फॉर 1000 मिली सेकेंड. दैट मींस 1 सेकेंड के लिए फिर से वो बुझा हुआ ही रहेगा. ओके, सो दिस इज हाउ void loop works. Okay, so let's start with a simple task. Okay, what all things we have learned right now, let us just use that and let us do a simple task using three LEDs that is red, yellow, and green. We have to build a traffic light. Okay, and there is a little bit hint. Okay, that after each illumination, जैसे ही LED जलता है उसको उसके बाद बंद होना पड़ेगा. Yes, so let us see. So what all things we will need for this task is, first we need a Arduino. Okay, generally we will use Arduino Uno or whatever kind of Arduino you can use here. Next thing which we need is a breadboard. Okay, this is breadboard which is generally used for temporary connections. So in our case, in our task, we will use this breadboard. Next, jumper wires. Okay, and here we will use male to male jumper wires. There are so many types of jumper wires such as male to female, female to female, male to male. Okay, so in our case we will just need male to male. Male to male means both the points or both the ends of this jumper wire cables has a pointed needle. Okay, that is used to just plug into the pins of Arduino. Arduino का जो pins वाला area रहता है वहां पे इसको हम लोग plug in कर सकते हैं. Next, we will need three LEDs, red, yellow, and green. Okay, and one important thing to know is that any LED has two legs. इसमें भी देख रहे होगे this green LED, it has two legs. जो लेंथियर लेग रहता है उसको हम एनोड बोलते हैं और जो शॉर्टर लेग रहता है उसको हम कैथोड बोलते हैं. सो इफ यू वांट टू ग्लो एलईडी, आपको करना क्या पड़ेगा, जो लेंथियर लेग है जो एनोड है उसको पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, यू हैव टू कनेक्ट दैट लेग विथ पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी. And this is one of the most important things. Okay, if you want to upload the written program, जो आप माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं Arduino IDE में, उसको अगर हम को अपलोड करना है, then we need this Arduino USB cable. Okay, this is the printer cable. Printer cable भी बोलते हैं इसको, क्योंकि प्रिंटर और कंप्यूटर को जो कनेक्ट करते हैं with the help of this cable only. So this is again a very important material required. So step one, what we have to do is we have to first give power to the breadboard.
इन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट हमने सबसे पहले डिजिटल पिन वाला जो एरिया है आर्डिनो का, वहां पे एक ग्राउंड पिन होता है जस्ट आफ्टर द 13th नंबर पिन। ओके, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है ब्रेडबोर्ड के एक पावर बस वाले लाइन से। इसको पावर बस बोलते हैं। इट कैन बी अ ब्लू और ब्लैक कलर लाइन, और दूसरा जो रहता है रेड। तो यहाँ पे हम ग्राउंड से कनेक्ट किए हैं, दैट मीन्स वी आर गिविंग नेगेटिव पोलैरिटी टू दिस ब्रेडबोर्ड। और ऐसे ही हम लोगों को पॉजिटिव पोलैरिटी देना है, वो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम में किस तरह, आगे देखते हैं। लेट अस सी। Okay, so first we have to add the LEDs. So here we can see, as per the traffic lights is concerned, हम यहाँ पे रेड, येलो और ग्रीन लाइट को कनेक्ट कर दिए हैं in series with few registers. Okay, each for LED. एक LED के लिए एक हम यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो रजिस्टर का काम ये है कि LED के पास में जब पावर पहुंचता है, उसको थोड़ा सा वो उस करंट को थोड़ा सा ड्रॉप कर दे। ओके, सो दैट ये जो LED है वो डैमेज ना हो जाए। देन we have to complete this circuit. So here you can see the lengthier leg parts are actually connected to the Arduino board, और वो कैसे connected है इस तरह से। With the help of this schematic diagram you can see the positive legs of this Arduinos are connected to digital pins 2, 3 and 4. Okay, 2, 3 and 4 we have selected as the output pin of this Arduino. Okay, we will see in the program कैसे हम इन पिन्स को पिन मोड के सिंटेक्स के थ्रू हमने क्या किया है, इसको आउटपुट पिन ले लिया है। Okay, so at last your whole this project should look like this. Okay, once you have connected all the connections carefully, सही से अगर कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से वो काम करेगा। So let us see the programming. Okay, here you can see we have first assigned pin number 2 as green. इसको हम लोग green वाले वेरिएबल में डाल रहे हैं। Yellow similarly 3 to yellow and 4 to red. Okay, and we have assigned delay. Delay means जितने देर वो जल के फिर क्या करेगा, वो रहेगा। So in the case of green, okay, so once glown, एक बार जब टर्न ऑन कर देंगे हम ग्रीन LED को, it should remain on for 5 seconds. 5000 milliseconds means 5 seconds. Similarly, yellow will remain turned on for 2 seconds and red will turn on for 5 seconds. Here you can see again under void setup function we will again describe the output pins. Okay, so in the first case हमने 2 को assign कर दिया था green के लिए, so directly we can write green. So you can say that जो 2 नंबर का पिन है उसको हमने आउटपुट ले लिया है ग्रीन के लिए। Similarly for yellow we have taken the pin number 3 and for red we have taken pin number 4. यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल में हम लोग जो असाइन कर रहे हैं वो ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे पिन मोड 2 कॉमा आउटपुट। दैट मीन्स पिन नंबर 2 को आप आउटपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 3 यहाँ पे लिख सकते थे 3 ओनली 3 इन केस ऑफ इन प्लेस ऑफ येलो, और वैसे ही रेड के प्लेस में 4 ले सकते थे। But since we need to know which pin has been connected to which LED and to assign them, और जो डिले हमको देना था 5 सेकंड का, 2 सेकंड का या 5 सेकंड का, उसको करने के लिए we have little bit written this program in this kind. Okay, ऐसे हमने लिखा है। Then under void loop अब हमको बताना है कि कौन से लाइट को कैसे डिले होना है या फिर कैसे जलना है। Okay, so green light function, under green light function again we have written delay green. If you can see in our if you have seen in our previous
स्क्रीन जहां पे हम लोग वॉइड सेटअप कर रहे थे, उसके जस्ट पहले हमने पहले ही डिले ग्रीन को असाइन कर दिया था टू बी फॉर 5000 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 5 सेकेंड के लिए। वैसे ही येलो लाइट को भी डिफाइन किया था। सो सिमिलरली वी हैव डिफाइंड एवरी डिले, and what we are going to do is we are again going to take the green light function. So अगर ग्रीन लाइट को हमको ग्लो करवाना है तो बाकी के एलईडीज को क्या करवाना पड़ेगा, उनको टर्न ऑफ कराना पड़ेगा। So that is what we have written inside green light function. First we have used digital right, and ग्रीन जो एलईडी है उसको हमने हाई कर दिया है, और जब ग्रीन हाई हो रहा है तो बाकी के जो दो एलईडीज हैं येलो एंड रेड, दैट हैज टू बी लो। ओके, एंड सिमिलरली वी हैव डन फॉर येलो एंड रेड एलईडीज आल्सो। जब येलो एलईडी जल रहा होगा, दैट मींस व्हेन येलो इज डिजिटल रिटर्न हाई, अदर्स हैज टू बी लो। सिमिलरली रेड लाइट के लिए भी वैसे ही। ओके, सो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम इज डन। Okay, so similarly, we can also modify our task or modify our project. Okay, so if you want, you can try this at your homes, and we will see what we can do with this task. Okay, so for just now, I'm giving you a task. Modify task 1 to have an advanced green blinking green light. अब ग्रीन लाइट को आपको फॉर you have to turn it on for 3 seconds before illuminating the green LED for 5 seconds. That means we have to do a blinking project here. Okay, so green LED को आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए blink भी करवाना है. Okay, so this will be the task 2. So I hope you have liked this video, and in future we will again do more such kind of videos. Thank you all for joining today, and I hope you are safe. We will meet soon. Thank you.